हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अगर आप आज की पोजीशंस देखोगे तो ये आज की पोजीशंस। सो द रेट आई टू वाज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये यूजुअल है, एक्सपायरी डे पे यही होता है। मैं ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं लेता हूँ एक्सपायरी डे पे। इफ़ पॉसिबल आई अवॉइड इट, बट द थिंग इज आई स्टिल जस्ट डू वॉच इट फॉर द betterment of my skill। द टेक्निकल एनालिसिस इससे बेटर होता है, मतलब चाहे आपका दिन हो या ना हो, सेटअप बने या ना बने, आपको अगर अपना टेक्निकल एनालिसिस बेटर करना है तो आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। बट स्टिल आई एडवाइज दैट ऑन एक्सपायरी डे जस्ट ट्राई एंड बी कॉशियस इनफ। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड जो बना है वो बैंक निफ्टी में बना हुआ है, और ये बना है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैंडल। सो दिस इज द कैंडल इन विच आई एंटर्ड। I'll mark it. So you can see this is the candle in which I entered. I'll show you the positions and orders here. See if 11:35 it is. So if you can see, this is the candle in which, and it is a very simple thing. ये जो हमारा setup है, the selling swing exhausted here in this candle, and then here the buyers enter the market. They took the rejection and again bounced back, और यू कैन से रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ वी गो इन अ रिवर्सल ट्रेड। सो दैट्स व्हाट इट इज। या आई कुड हैव गॉन फॉर 1:3 or 4 रेशियो एज वेल, बट द थिंग इज इट वाज टू वोलेटाइल टू होल्ड। तो वही चीज़ था, द प्राइसेस वर नॉट जस्ट पिकिंग अप द मोमेंटम, so I had to leave or exit the trade. So I exited at I think this or this candle. I'll show you the timing as well. So you can see 11:46 candle. It was 11:46. Yeah. So this is the candle, as you can see. As there was an impulsive candle, so वही चीज़ देखा मैंने। इसी कैंडल में अपना जो टारगेट है वो हिट हो चुका था, 1:2। तो I exited the trade and it was a small quantity, because mostly or usually you can say expiry days are so much useful for the sellers. They don't leave it uh, unguarded, as you can just see the thing। मोस्टली जो है सेलर्स का पैसा ही बनता है, या फिर जो भी बोलो, उनकी जो पूरी वीक की मेहनत होती है वो ऑन द एक्सपायरी डे उनको फुलफिल करना होता है। तो वो कुछ भी हो जाए, एक्सपायरी डे पे प्राइसेस को आउट ऑफ 10 दे विल कंट्रोल 8 to 9 days। सो अगर आप लकी हो तो आपको 1 या 2 दिन वो जो है वो मिलेंगे, और बाकी 8 दिन आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो इट्स अप टू यू। या आई नो देर इज अ ह्यूज ट्रेंड people follow to trade especially on expiry, but if you ask me, the expiry days are the worst to trade. Yeah, that's my opinion about the expiry day trading. See, the thing is, if you have the skill, it will work every day. So expiry day is no special. So just keep it out of your head. Just clear your head about the expiry day hype. Okay, it's the worst of its kind. It's not gonna ever help you. You will only ruin your capital, your confidence, and everything. So if you ever want to just rethink about your strategies or your style of trading, just don't apply it on expiry day, because it never works on expiry days. So that's my advice, and I will soon bring the playlist
related to the setup I use. So I think it will be very much useful to you all. So I am thinking about that. So please, if you can, just subscribe, like, and put something in the comments. And thank you all for watching the video, and I will see you in the next one.